All right, good evening, everyone, and welcome to our last lecture for this batch. I hope it was a good journey and I helped you somewhere learn UI UX. I hope I helped you guys become a designer at least to some extent. Of course, now it would be your thing that how much do you practice and how much time do you spend with the designs, right? Of course, I'm there to support you guys. Of course, I'm here throughout life for mentorship. So, to start with, any questions today, apart from what we are going to cover, any questions? So, there are a few already in the batch who have started applying for job. Some even got the job, like Riya is working, Akshay is working, Nishi, I think she is also working. I think she got the job too. So, overall, happy, but I want every one of you all to start working soon. But for that, you'll have to again work on the portfolio. So, any questions, guys? Anyone? It can be any question, not necessarily with regards to UI UX. It can be any sort of question. Right? All good? Chalo, theek. So, by the way, sorry I could not upload the Wednesday's lecture, but while we are speaking, it is getting uploaded, right? So, by the end of the lecture, I'm sure the lecture will be processed and you will be able to see it, the recorded one. Yeah. All right. So coming back to our things that we need to finish off. Just give me a second. All right. So yes, let me share my screen. So in the agenda, what we had. Uh, let's go through the agenda. Yes. The design system, landing page, portfolio resume, and training the jobs. Okay. So let's start with the design system. Okay. So if you remember, I had shared, the Bootstrap wala link once to give you guys the gist of all the components. What all components do we need, correct? And what all components do we have? So based on that, now what happens is when we complete a design, okay, when we complete a design, we so we deliver a design system also. Now, how does a design system look like? Let me share an example.
Uh, so I'm giving you two examples. Okay. So we have this example of a design system. Now, when we design, this was uh, fine, correct? So if you go back to our mobile app design, yes, correct. So here, if you notice, we had a button, the cross icon, the text fields, the hyperlinks. Then we have the header, we have the titles, the section titles. This entire component card with the photo, name, location, and the review. The icons, all sort of icons. Right, these also icons. The bottom nav. Now this itself can also be one more component. So here in the design system, what we do is we mention every single thing. Okay. So this is an example. We talked about the colors. So we first, you know, put in all the colors. So don't worry about having so many colors. This is a community file from Figma, and they are just given an example as to what all is there in a design system. It's an entire UI kit. So they have lots and lots of colors and everything mentioned. Don't worry about that. हमको इतना सारा नहीं देना. Depending on the logo, depending on the brand guidelines that the client will provide, we will simply use, our sort of color palette. What all we will. Okay. So here they have this default gradient, primary, secondary, etc., etc. They have their primary colors, the info, etc., etc. So we only have to define the primary colors and the secondary colors. That's it. So in the primary color and secondary color also,
we define something like this. Yes. So in the primary color, I have this entire set, and in the secondary colors, they have so many colors, but we won't have so many colors. We only will have swatches. So what is recommended is have two primary colors, okay, and maximum you can have 3 to 4 secondary colors, which you use very less. Okay. Then we have the typography. One is heading and one is for the body copy, right? So Inter. So they have used the font Inter. It is same and several right. So they have only used Inter as the font. So then you define as to what should be the font size of the heading. What should be the font size of heading, second heading, that way. So you just define everything. Heading 1, heading 2, size, line height, etc. Okay. Effects we don't need, to be honest. We don't need all of these. Yes. We need icons and graphics. Yes. So of course, as I said, this is a demo UI kit. So based on our design, what all icons do we have and what type of icon we have, we just need to keep them together. So sorry, my apologies. We have to keep them together. Okay. Then we need to just add the grids and the spacing. So जो हमने already किया है, desktop के लिए ये है, tablet के लिए ये है, mobile के लिए ये है. It's the same thing. We just have to add it into a frame. Spacing 8-point grid again. So they have used 4 points, but we will use 8 points. 4, 8, 12. So उनका 4 के multiple में हमारा 8 के multiple, whatever. So आप 4 भी use कर सकते हो, 8 भी use कर सकते हो. There are people who use 6 also. Emojis will ignore. We don't need that. Then we need all of these components. So इन्होंने अलग अलग पेज बनाया है. What we can do is on one single page itself we can just mention again. इनका एग्जांपल से मत जाना कि इतने सारे बटन होने चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. You just need one primary button. This is the primary button जो filled होता है. The line one is the secondary button and the button without any borders. And it's just text with the color, that is a tertiary button. So जब tertiary button को आप mouse लेके जाओगे, you will get a border like this. Okay. So you have buttons, you have drop downs, then you have chips, which is nothing but the tags. Sorry, इसको हम chips भी बोलते हैं. ठीक है, अलग अलग type of chips. Only text. You can close the chips with the image, with the icon. Here with the icon, logos. ठीक है. So इसमें एक प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, फिर इन्फो, वो सब के कलर्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. वार्निंग आती है तो रेड, अलर्ट आएगा तो रेड, और ये चेक बॉक्स है तो एक एक्टिव स्टेट, एक डीएक्टिव स्टेट, एंड इफ यू वांट टू कैंसिल द सिलेक्शन, अगर सिलेक्ट ऑल किया तो ये उसका स्टेट. सो ये सब चीज हम एक ही फ्रेम में टाइटल देके हम ऐड कर सकते हैं. बट द आइडिया इज यू वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स. ठीक है. तो उससे होगा क्या कि जब आगे चल के हम इसी ऐप में कोई और फीचर ऐड करेंगे, वी डोंट हैव टू रीडिजाइन एनीथिंग. हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी डिजाइन सिस्टम में होगा, हमको बस उसको प्लग एंड प्ले करना है. ठीक है. कोई डाउट्स, एनी डाउट्स फॉर द डिजाइन सिस्टम? यस निशी. सर ये मोबाइल के लिए है या वेबसाइट के लिए है? नहीं, सबके लिए डिजाइन सिस्टम एक ही होता है. सो अगर मान लीजिए हम भी अपने मोबाइल ऐप बनाए मेड फाइंडर ऐप का, ठीक है. सो अगर हम उसका वेब वर्जन बनाएंगे जहां पर हम
ऑनलाइन जाके उसको लॉगिन वगैरह भी करवाएंगे, तो हमने जो ऐप में जो डिजाइन सिस्टम यूज किया है, द टाइप ऑफ बटन्स, द आइकन्स, वो सब कुछ सेम ही होगा। साइजेस थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि मोबाइल में ऑफकोर्स थोड़ी छोटी साइज होगी, हम डेस्कटॉप में थोड़ी बड़ी साइज यूज कर सकते हैं। साइज कैन बी डिफरेंट बट द स्टाइलिंग वुड बी द सेम। और टाइपोग्राफी में हेडिंग 72 पिक्सल वो सब दिया है, तो उसको एग्जैक्ट वही 72 ही यूज करना है कि उससे छोटा या उससे बड़ा यूज कर सकते हैं? ये कोई आइडियल ये नहीं है साइज। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में 72 यूज किए, हम 72 यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं है। हम जो यूज करेंगे हम वो यहाँ पर डालेंगे। ओके। और बेसिकली जो बटन साइज मोबाइल के लिए, वेबसाइट के लिए वो सब होता है, तो अगर उसको बेसिक थियरी रीड करनी है तो वो कहाँ से कर सकते हैं? वो डिजाइन सिस्टम आके देखिएगा ना कि जैसे मोबाइल में ये बटन साइज है और वेबसाइट में ये बटन साइज है, तो वो आप सब डाल सकते हो उसी में। ओके। तो या आप ऑप्शन दे सकते हो कि मोबाइल, क्योंकि इनफैक्ट होगा क्या, यू डोंट इवन नीड अ सेपरेट बटन साइज और एनीथिंग, क्योंकि साइज आपकी स्क्रीन साइज पे डिपेंड करेगा, तो आपको साइज मेंशन नहीं करना है और आपको मतलब स्टाइलिंग ऑफ द बटन मेंशन करना है। एग्जांपल एग्जांपल अभी जैसे इनका ये बटन है, करेक्ट, तो यहाँ यस। पर कोई साइज मेंशन नहीं है। अभी अगर इसका टेक्स्ट बढ़ जाएगा तो साइज अपने आप बढ़ जाएगा, बट इसका स्टाइल फिक्स है कि इतना कॉर्नर है, इसमें ये टेक्स्ट आएगा, है ना, इसका पैडिंग वो सब फिक्स है। तो जो वो होता है ना कि बटन को इतना टच करे, इतनी साइज होनी चाहिए। हाँ, ये उतना है ही ना। इफ यू सी, इसका हाइट 48 है, तो अगर ये मोबाइल में यूज करोगे या डेस्कटॉप पे, दोनों जगह सेम है। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू सर। यस रिया। Sir, I have a question. It might be a bit silly, but I'm getting confused, like while designing and all, okay, where we should use in typography mainly, like and in buttons as well. Like when we should use bold, extra bold, normal bold, medium bold, or like light or something. Like where to use what is getting very confusing. सो देयर इज नो थंब रूल। ठीक है, एक डिजाइन में देयर इज नो थंब रूल कि आपको यहाँ पर बोल्ड यूज करना है, यहाँ पर आपको लाइट यूज करना है, ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर आप ये वाला देखोगे, राइट, तो यू कैन यूज बोल्ड ऑल्सो, यू कैन यूज नॉर्मल रेगुलर ऑल्सो, करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन टाइप दैट यू आर गोइंग अहेड विद, जैसे हमने यहाँ पर बोल्ड नहीं यूज किया है, करेक्ट, Right. we are using normal, so it is our design type what we are choosing, and it is not the standard thing कि आपको अगर टाइटल तो बोल्ड ही रखना चाहिए। हो सकता है मैं इसको लाइट रख के कैपिटल भी कर दूं, करेक्ट। So as such there is no thumb rule, but there is a thumb rule that don't use more than 2 fonts। अगर Yeah. टाइटल के लिए एक फॉन्ट यूज कर रहे हो आप और बॉडी कॉपी के लिए एक फॉन्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ज्यादा कोई यूज मत करो। इफ यू वांट वेरिएशन देन यूज द फॉन्ट फैमिली इंस्टेड, ठीक है। Okay. नया फॉन्ट यूज मत करो, 2 फॉन्ट इनफ है। Okay. But क्लियर? yes, yes, yes. यू आर आस्किंग समथिंग एल्स आल्सो। Like I got that you said that use the same family. Like there's no particular rule. करेक्ट, ठीक है। एनी अदर डाउट समझ में आया डिजाइन सिस्टम क्या होता है? सर डिजाइन सिस्टम हम बनाएंगे कब? जब हमारी डिजाइन वगैरह हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स लेके हम फिर उसको डिजाइन सिस्टम बनाएंगे। देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। अगर हम वेब ऐप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको मालूम है टेबल्स होने वाली है, फॉर्म होने वाला है, उसके ज्यादा कुछ और डिजाइन कुछ होने नहीं वाले। जैसे मोबाइल ऐप में तो कैसे बहुत सारी चीजें आ सकती है, यहाँ पर ये सर्कल एलिमेंट है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल एलिमेंट है, यहाँ पर आइकन्स है। सो ये हम जैसे जैसे बनाएंगे वी विल कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर कंपोनेंट्स, वेयर एज इन अ वेब ऐप, ठीक है, जैसे एडमिन पैनल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होगा ना, जैसे ये वाला है, तब इसमें कंपोनेंट वाइज अगर मैं देखूं तो क्या है, I have a card, correct, I have the icons, I have the navigation,
ये कार्ड में अगर ये है तो मैं कार्ड को एक कंपोनेंट बना सकता हूँ। आई यूज द सेम कार्ड, उसका साइज अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, बट टाइप ऑफ कार्ड कैन बी द सेम। फिर उसके बाद दिस कैन बी अ कंपोनेंट, दिस कैन बी अ कंपोनेंट लिस्ट, फिर चेक बॉक्स आ गया, आइकन्स आ गए, करेक्ट। सो ऑल ऑफ दीज आर देन पार्ट ऑफ माई डिजाइन सिस्टम। यहाँ पर भी कार्ड देखो सेम है, उसके अंदर मैंने एक और नया कार्ड बना दिया, ये फोटो डाल के ये सब। सो नाउ दिस एंटायर थिंग आल्सो बिकम द कंपोनेंट। यस, सो ऐसे करके हम डेवलपर को जब देना है तो जो जो चीजें रीयूज होगी ना, हम उसको उस हिसाब से देंगे। जैसे ये पूरा कार्ड रीयूज हो सकता है, तो हम इसको हमारे डिजाइन सिस्टम में डाल के दे देंगे। वेरेज ये सारी चीजें अलग अलग भी मेंशन होगी, ये बटन, ये टाइप ऑफ बटन, रिव्यू का ये चिप, करेक्ट। ऑल ऑफ दिस विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द डिजाइन सिस्टम। ये हाइपरलिंक, these टाइप ऑफ बटन्स, ये सब मेंशन होगा। तो अगर उनको कल उठ के कहीं और एक और बटन डालना है तो उसके लिए उनको डिजाइनर के पास नहीं आना पड़ेगा, दे विल सिंपली ऐड द सेम बटन, द कंटेंट बटन चेंज करने डेवलपर्स। या अगर डिजाइनर को भी कुछ नया बनाना है तो दे यूज द सेम कंपोनेंट, दे रिप्लेस द टेक्स्ट, कंटेंट, बटन का टेक्स्ट वगैरह, राइट। सो उसमें फिर आप पहले डिजाइन सिस्टम भी बना सकते हो और उसके बाद डिजाइन बना सकते हो, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर टेबल ही होने वाला है, यहाँ पर एक कार्ड ही होने वाला है, यहाँ पर एक फॉर्म ही होने वाला है, करेक्ट। इफ यू नो, तो फिर आप वो डिजाइन सिस्टम बना दो और बाकी की स्टेज पे डेवलपर भी रेप्लिकेट कर सकता है। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स? नो, ठीक है, चलो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द लैंडिंग पेज। सो हम ये बना रहे थे लैंडिंग पेज, राइट। So yeah. Now I would like to explain you what is a landing page rather. Before we move there, so now this is the material design. ये उनका डिजाइन सिस्टम। यहाँ पर देखो उन्होंने कलर वलर दिया है, ये प्राइमरी, ये सब कलर दिए है उन्होंने। फिर उसके बाद सारे कंपोनेंट्स दिए हैं, ये बटन्स कैसे होने चाहिए, राइट। तो ये मटेरियल यूआई का डिजाइन सिस्टम है। मटेरियल यूआई इज फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। देखो कार्ड्स जो हम बात कर रहे थे ना, कार्ड्स, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ कार्ड्स होंगे जो मेंशन करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे है डिजाइन सिस्टम। नाउ कमिंग टू द लैंडिंग पेज एंड द होम पेज। अभी मान लो हम एप्पल की वेबसाइट पे जाते, सो अभी ये जो दिख रहा है ना, ये, नाउ दिस इज अ होम पेज। व्हाई? बिकॉज दिस होम पेज हैज मेनी थिंग्स फॉर मी। ये इवेंट का कार्ड है, ये स्टूडेंट के लिए कुछ है, ये आईफोन 15 का है, प्रो, आईपैड एयर, मैकबुक एयर, वॉच, राइट, ट्रेड इन। So a homepage will have many things for a user, जो आप क्लिक करने पे अलग जर्नी पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन what is a landing page? So when I talk about the landing page in this website itself, this particular page where I talk only about a particular product, only about a particular thing, and I only have one prominent call to action which will take me to like a separate journey for this product only। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो सिर्फ बाय है, ठीक है। सो जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो जितने भी कॉल टू एक्शन है वो मुझे बस इसी पेज पे रखेंगे, राइट। देखो पॉपअप, they won't take me anywhere else unless I click on buy now। ये भी मुझे पॉपअप में एक और कंटेंट दिखा रहा है। Sorry, I haven't slept.
feeling super sleepy. So sorry for that. So this is an example of a landing page where you are promoting a certain product, a certain system, a certain platform, and you are only talking about that and nothing else. And you have a prominent call to action to perform the next step. Yes, I'll give you a website landing folio. Now this particular website has all set of examples for landing pages. So ये website भी आप use कर सकते हो for references. Now if I see this, this is an example of a landing page. जहाँ पर I am talking only about a particular product. This. और कोई call to action ही नहीं है, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में बताया. सो नाउ दिस इज अ लैंडिंग पेज. सो जब मार्केटिंग की टीम ऐसे लैंडिंग पेज क्रिएट करती है, इट हेल्प्स देम कन्वर्ट मोर. जैसे ये है, करेक्ट. दिस इज अगेन अ लैंडिंग पेज. कॉल टू एक्शन है ज्वाइन द वेट लिस्ट. सो इस तरीके से वी डिजाइन द लैंडिंग पेज. सो द लैंडिंग पेज का मेन मोटो इज टू मेक यूजर्स क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एक्शन. जैसे हमारा जो ये था, तो यहाँ पर हमारे पास भी एक ही मेन कॉल टू एक्शन था, रजिस्टर नाउ. दिस इज अ लैंडिंग पेज. क्लियर है? कोई डाउट्स? एनीवन? ठीक है. Move to the next. So, what's the Yes. difference between a home page and a landing page then? आप अभी ज्वाइन हुए क्या? No, sir. I was in the meeting. Okay. ठीक है, I'll explain again. No worries. किसी और को भी ये सेम डाउट है? नो? ठीक है. So a home page will talk about multiple things. जैसे McKinsey है. So now they will talk about many things. जेने ये इनका एक अलग ही इंसाइट है, करेक्ट. यहाँ अगर मैं जाऊंगा, so now they are taking me to a sustainability page about agriculture. ये मैं क्लिक करूंगा तो मुझे अलग पेज पे लेके जाएगा, अलग पेज पे. Okay. This is not the action that they want you to take. इन्होंने ओपन छोड़ दिया है. होम पेज पे हमेशा ओपन है, where you want to go. तो आप अगर ये सेक्शन आओगे तो ये सेक्शन पे आप अलग कोई जर्नी पे चले जाओगे, ये सेक्शन पे आओगे तो कोई अलग जर्नी पे चले जाओगे, राइट. ये रिपोर्ट पे लेके जा रहा है, ये गाइड्स पे लेके जाएगा, ये ब्लॉग पे लेके जाएगा, ये मुझे करियर पे लेके जाएगा. This will take me to the jobs, correct. Get in touch. Whereas in the landing page, which is this, you will see there is no call to action at all. You only see these call to action. Watch demo. तो आपको बस डेमो पे लेके जा रहे हैं. सेम चीज ही है वो. The product is not changing, the journey is not changing. And this is my main call to action where I will be redirected to a form to get details. But I am only talking about a product in depth, only about perspective product, this perspective, right? I am only talking about that. तो अगर मैं एक चीज को, एक सिंगल चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, I'll create a landing page for that and not a home page. जैसे कोई अगर कंपनी है तो उस कंपनी का एक होम पेज बनेगा, क्योंकि मुझे उसमें जो करियर वाले आएंगे उसको भी अकोमोडेट करना है, इन्वेस्टर को भी अकोमोडेट करना है, फिर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी अकोमोडेट करना है, सब कुछ. Whereas लैंडिंग पेज में इट इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग, कि जहां पर आप अपने एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो डिटेल में. समझ में आया Okay, डिफरेंस? sir. Yeah, yes, sir. So to give you one more example, जैसे अभी क्लासेस है, so अगर एक क्लासेस का एग्जांपल दूं, तो अगर जैसे बैच चालू होने वाला है, so I'll have a landing page कि इस पर्टिकुलर बैच में या फिर UI UX रुचिरम UI UX में what all things are covered, क्या स्टूडेंट्स का फीडबैक है, their past work,
the mentor's profile, वो सब मैं सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा. Whereas if I have to talk only about Ruchiram, so then Ruchiram is into designing, Ruchiram is into teaching, Ruchiram is also into consulting. तो अगर मैं रुचिरम का होम पेज बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी फैक्टर्स आएंगे. Whereas अगर मैं सिर्फ रुचिरम अकेडमी का बना रहा हूँ तो उसमें सिर्फ क्लासेस के बारे में आएंगे. That will be a landing page. Clear है? Yes, sir. Okay. Now coming to the portfolio. Next हमारा I guess portfolio ही है. Yes. So मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स भेजे थे पोर्टफोलियो के. किसी ने चेक किए? Has everyone checked? Yes or no? Raise hands. Okay. ठीक है. So before we move on to the portfolio, there are a couple of things that I want you guys to hear very specifically. अब कोर्स खत्म हुआ है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं बना है. We are not yet done with our portfolio. So of course you guys had some commitments. कोई job कर रहा है, someone is studying, whatsoever. But when we say portfolio, that does not mean कि हमने जो भी कुछ बनाया आप सब कुछ डाल दो. ठीक है. जैसे अगर हम निशी का देखें एग्जाम्पल, हाँ. So this is a way to present, right? यहाँ पर पूरा पूरा केस स्टडी नहीं है, एक स्क्रीन है. So as an interviewer, I know that she is capable of doing web apps, right? If I see this, अलग अलग है, but I am able to judge कि हाँ she knows what is spacing, she knows the difference between light mode, dark mode, she knows, you know, about the overall web app structure. अगर if I see this, भले ही इसमें 4 स्क्रीन है, but at least I know that, you know, एक basic design aesthetic है, right? So it is not necessary that you add everything. पूरा journey बताओ जरूरी नहीं है. Just showcase your designs. Just simply showcase your designs, right? फिर वो एक स्क्रीन हो, 2 स्क्रीन हो या ऐसा 404 हो, it's fine. पर एक एक छोटा छोटा चीज भी उसमें शोकेस करो. जैसे इसमें सिर्फ प्रोफाइल ही है, प्रोफाइल और सेटिंग. So it is good enough for me to judge the spacing, the font hierarchy. That is what the interviewer sees, and not कि भाई आपने पूरा ऐप का क्या किया है ये, because everyone knows कि वो आपने कोई genuine प्रोजेक्ट नहीं किया. Everyone knows कि आपका you know ये एक केस स्टडी है. Everyone knows किसकी टेम्पलेट्स मिलती है, आपने वहां से उठा के कंटेंट चेंज किया. So it is not about the entire journey क्या wireframe डालो, information architecture डालो, you put every single thing. No. Focus on smaller parts. अगर एक इतना सा ये भी बनाया है लैंडिंग पे, इतना सा, तो make sure you present it good. इतना बनाओ, इतना एक खाली फर्स्ट फोल्ड बनाओ, but make it beautiful, make it look good, make it usable. ठीक है. So this is how you add to your portfolio. इसमें कोई तामझाम नहीं है. सिंपल वो जो बनाया है उसी का JPEG अपलोड कर दिया. करेक्ट. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. जो बना रहे हैं उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करके जस्ट अपलोड है.
Clear? No doubts? Any doubts? Anyone? Sure. So Behance will only be a portfolio, right? हाँ मतलब सी एक Behance हो गया, दूसरा Dribbble पे भी ऐसे कर सकते। I have my portfolio on Dribbble. Just a second. तो दिस इज माय वर्क। तो इसमें भी मैंने क्या किया, मैंने भी बस वो स्क्रीन ही ऐड किए। करेक्ट, दैट्स इट। So people see and they know as to what I am capable of doing. What designs can I do? Correct. So this is my portfolio. Clear है? So no need of entire case study. ये वो एक screen बनाओ, सुंदर बनाओ, upload करो. That's it. Keep on designing, keep on uploading. That is your portfolio. As simple as that. Okay, sir. ठीक है। अब रेज्यूमे का आई विल शेयर फॉर्मेट। एक मैंने ऑलरेडी रोहन का भेजा था। आई विल सेंड वन मोर रेज्यूमे दैट इज माइन। ठीक है, दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, इट इज फाइन, गुड इनफ। बट मेक श्योर कि जब आप जॉब पोस्ट कर रहे हो ज्यादा ज्ञान मत दो। डोंट स्पीक टू मच इन द ईमेल और ओवर द चैट्स। सिंपली से this is my resume, this is my portfolio, I am looking out for a job, let me know if I am suitable for the position. That's it. क्योंकि जो HR है उसके पास दिन में 50 चीजें आती है, so वो सब पढ़ने नहीं बैठते वो लोग। एंड एवरीवन नाउअडेज नोज कि चैट जीपीटी से लोग कॉपी करके डालते। मैं एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। मेरे पास दिन के, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ईमेल पे, through blogs, through LinkedIn, and also on my Instagram. The bare minimum, I get 20 inquiries. Is there any job opening? And उनका मैं portfolio देखता हूँ, I check every portfolio. उनका मैं portfolio देखता हूँ, clearly समझ में आ जाता है that they only work on Figma. उनको सिर्फ Figma आता है, they don't understand the concepts of UI UX. तो आजकल वो हो गया है कि if you know Figma, you become a UI UX designer, वैसा नहीं है। So good that you guys at least know the difference now. Anyway, so ज़्यादा ज्ञान मत दो, don't speak too much, don't write too much, keep it very precise, to the point, one line, two line, show them the work. Once they are convinced with the work, फिर आपकी नैया पार है, then it's very easier for you guys. ठीक है? So that is done, and for the interviews. Now, if you are done with your portfolio, if you are done with your resume, only then you can crack the interview. In the interviews, they will ask everything that we did in the lecture. They will ask you what is the grid system, the different types of fonts, right? What font do you like? What is color theory, primary color, secondary color, tertiary colors, right? They will ask you about the e-commerce part. What all pages are included in e-commerce? They'll ask you whether or not you do you know responsive or not? What is the difference between responsive and desktop, etc. यही सब चीजें जो हमने ऑलरेडी कवर की है ना। लॉस वगैरह तो नहीं शायद पूछेंगे, क्योंकि अगर आप यूएक्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपके लिए लॉस पूछेंगे, लेकिन अगर आप यूआई प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो वो आपसे लॉस नहीं पूछेंगे। दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन इफ यू टेल देम दैट आई एम आल्सो अवेयर अबाउट यूएक्स लॉज एंड बिहेवियरल साइंस, जो हमारे कॉन्सेप्ट से लॉज है, सो देन थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका भी। बट मेक श्योर वंस यू से दैट यू शुड बी एबल टू आंसर देम, क्योंकि अगर आप जैसे ही ये बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेल मी सम लॉज। तो अगर आप वो वहां पर फंबल हो गए, सो दे कम टू नो कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर, हाँ, व्हाइल गिविंग द इंटरव्यूज डोंट लाई। आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो। डोंट थिंक, डोंट फंबल, और डोंट ट्राई टू मेक अप एन आंसर, क्योंकि आप जो आंसर देते हो ना उस आंसर पे दूसरा क्वेश्चन आता है हमेशा। सो मेक श्योर आंसर वेरी प्रिसाइसली। Don't give unnecessary inputs if not asked. You are digging a hole for yourself if you do that. ठीक है? Any more doubts?
any queries. And by the way, the lecture is also uploaded, the 15th lecture, and this lecture will also be uploaded today itself. Any doubts, anyone? No? All right. So this was it. That was it. I am here only. अगर ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स खत्म हो गए, so I won't be in touch. हमारा ग्रुप भी इंटैक्ट रहेगा. Everyone can post if they find any job openings, internship openings. आप लोग भी डाल सकते हो. Even I'll keep posting. ठीक है. And I want every one of you all to send me the portfolio so that I can review. आपको update दे सकते हो. Send me the updated resumes, everything. Right? Stay in touch. You have my number. Give me a call. WhatsApp me. All yours whenever you want. Okay. So don't hesitate. Don't think I'll be busy. ये वो मैसेज डाल दो. Will be in touch. आपको कॉल बैक आ जाएगा या मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा. But make sure you guys make a good career. Anywhere you feel you need my help, please ask me. Please. I will be more than happy to explain you all the concepts again. I will be more than happy to guide you anywhere needed. Okay. So that's it from my end. And if there's anything else you guys want